हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप एम्प का एक और नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्ल्यू रेट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं स्ल्यू रेट। तो सबसे पहले पॉइंट में मैं इसको समझाता हूं डेफिनेशन से। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? इट इज द मैक्सिमम चेंज इन आउटपुट with respect to time. So slew rate is just equals to dv naught dt max. ठीक है, so maximum rate of change of output is called the slew rate. अगर दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करें, अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन है, it is the ability of an op amp that at how much speed their output is changed when a large input signal like step input signal is applied to its input. तो कैसे ये बिहेव करेगा जब इसके इनपुट पर एक लार्ज इनपुट स्टेप वेव अप्लाई की जाएगी, तो जो इसका आउटपुट है वो कितनी तेजी से चेंज होगा, इस चीज को हम बोलते हैं स्ल्यू रेट। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। एक्सप्लेनेशन, ठीक है, देखिएगा ना। हम एक वोल्टेज फॉलोअर सर्किट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। सबको पता है वोल्टेज फॉलोअर सर्किट कैसे बनता है। वोल्टेज फॉलोअर सर्किट इज डिजाइन विद द हेल्प ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। तो एक नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का जो गेन होता है वो क्या होता है? 1 प्लस RF अपॉन RI। ठीक है, सो यहां से अगर ये फैक्टर क्या हो जाए, ओवरऑल 0 हो जाए, देन V नॉट अपॉन VI इक्वल्स टू 1, सो A इज 1। ठीक है, सो अगर मैं एक वोल्टेज फॉलोअर सर्किट ले रहा हूं, इट इज प्लस, इट इज माइनस। सो वोल्टेज फॉलोअर सर्किट क्या होता है? जिसका फीडबैक रेजिस्टेंस जो है 0 हो और जिसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो? इनफाइनाइट हो। सो दिस इज योर वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। नाउ एट द इनपुट ऑफ दिस सर्किट इज हैविंग a 10 volt waveform, 10 volt. This is VI. Now we know that for the voltage follower circuit the gain is 1, so V naught equals to VI. Then at the output we have the same waveform like that V0, that is 10 volt. ठीक है, now अब जरा समझिएगा क्या है स्ल्यू रेट का मतलब है। Ideally your output should reach 0 to 10 volt in 0 time. Ideally your op amp should reach 0 to 10 volt in a very short duration or in 0 time. But in practical system your op amp will take some time. Like that. Your op amp will reach 0 to 10 volt in this time. Clear है? बात समझ में आ गई? So ideally your op amp should reach 0 to 10 volt within a short time, but practically your op amp is taking 0 to 10 volt in some time. कितनी टाइम में ये आउटपुट 0 से 10 वोल्ट तक रीच करेगा, that depends upon the slew rate. That means how fast your output is changing, that is decided by the slew rate. तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? It means how fast output of an op amp changes. It depends upon slew rate. क्लियर है? यहां तक अभी भी डेफिनेशन क्लियर हुई नहीं। सो सपोज दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक टू रीच 0 to 10 वोल्ट। क्लियर है? अब अगर इसका इफेक्ट देखें या इसका जो ड्रॉबैक है, अगर मैं स्ल्यू रेट का ड्रॉबैक देखूं, अगर स्ल्यू रेट किसी का कम है तो जो वेवफॉर्म है आउटपुट की क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्ट। मीनिंग क्या? अगर ये वोल्टेज फॉलोअर सर्किट है तो इसकी इनपुट की वेवफॉर्म ये है और आउटपुट की क्या होनी चाहिए? ब्लैक बन। बट अगर स्ल्यू रेट की वजह से प्रॉब्लम आती है, देन आउटपुट इज डिस्टॉर्टेड। तो इस स्ल्यू रेट का जो ड्रॉबैक है, यहां पर स्ल्यू रेट का जो ड्रॉबैक है वो क्या है? वेवफॉर्म, आउटपुट वेवफॉर्म is distorted
डिस्टॉर्टेड। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हुआ। नाउ सेकंड पॉइंट, आई होप सो अब आपको जो डेफिनेशन है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ इन द सेकंड पॉइंट, फॉर आइडियल ऑप एम्प, फॉर आइडियल ऑप एम्प, फॉर आइडियल ऑप एम्प, फॉर आइडियल ऑप एम्प, slew rate is infinite, slew rate is infinite, but for 741 IC its value is 0.5 volt per microsecond. Clear? That means per second, per microsecond only 0.5 volt can change. क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई है। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी द डेरिवेशन ऑफ इट। सो इसके तीन फॉर्मूले, वो तीनों फॉर्मूले को मैं एक साथ समराइज भी करूंगा, तो जरा समझिएगा। नाउ इन केस ऑफ वोल्टेज फॉलोअर, वी नॉट सपोज वी आर टेकिंग वी आई एज Vm sin omega t। नाउ फॉर साइनोसॉइडल इनपुट, फॉर साइनोसॉइडल input, ठीक है, then V naught equals to Vi for the V naught is equals to Vi for the voltage follower circuit, then it is also same Vm sin omega t. Now just differentiate this voltage with respect to time, then it is Vm into omega into cos omega t. Now the maximum value of this change in output with respect to time is what we have to calculate. Now the value of cos maximum value is 1 at omega t equals to 0, that is at angle 0. So dv naught dt maximum occurs at when cos omega t equals to 1. Clear है, and this occurs at n pi. Clear है यहाँ तक। So it is omega m into Vm into omega, that is Vm into 2 pi fm. Clear है। So slew rate is dv naught by dt maximum, that is equals to Vm into 2 pi fm। ठीक है यहाँ तक। ये दो फॉर्मूले हो गए इसके। आई होप सो ये बात क्लियर हो गई होगी। नाउ इट्स यूनिट इज वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नाउ how much or how fast your output is changing with respect to time, that depends upon the op-amp capacitor. So in case of capacitor, we know that the IC is C dVc over dt. Clear? That means capacitor does not allow sudden change of voltage. Clear? From that if we have dVc over dt is what? IC by C. So the new formula for the slew rate is dV naught by dt, that is equals to IC by C, the capacitor current to the capacitance, that is equals to Vm into 2 pi fm. So you have to use all these formulas while calculating your numerical. Clear है यहाँ तक? Definition, value और formulas। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में समझते हैं कि कब आउटपुट में डिस्टॉर्शन होंगे या नहीं होंगे और इसका ड्रॉबैक भी। फोर्थ पॉइंट समझते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी at which no distortion occurs at output in output waveform occurs in output waveform. So if you have the slew rate, that is dV naught by dt max is equals to Vm into 2 pi fm. So fm is equals to what? Slew rate divided by 2 pi Vm. ठीक है यहाँ तक। Now next thing is what? Since slew rate is equals to dV naught by dt, now V naught is equals to AVI. Is it okay? So the maximum value, the maximum output that can be changed, that is plus minus Vset, plus minus Vset. So slew rate can also be written as
plus minus Vsat into 2 pi FM. So the maximum frequency at which no distortion occurs, that is may be written as slew rate divided by 2 pi Vsat also. ठीक है यहाँ तक. Now in the fifth point, we will see the conclusion or the conditions. Now condition is what? If slew rate is greater than or equals to dV by dt max, then output will not be able to follow input anymore, and it becomes triangular. अगर आपकी जो वेवफॉर्म है, इनपुट वेवफॉर्म जो है वो साइनोसाइडल है, देन अगर आपका आउटपुट डिस्टॉर्ट हो गया, देन द वेवफॉर्म इज लाइक दैट. क्लियर है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट? इफ slew rate is less than of dV by dt max, then output will easily follow input waveform. Then the answer is this is your input waveform Vi, then output will easily follow your input like that. This is your output waveform. So no distortion condition. क्लियर है यहाँ तक? आई होप सो ये भी क्लियर पॉइंट हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? द ड्रॉबैक. सिक्स्थ पॉइंट इज व्हाट? ड्रॉबैक. नाउ अगर मैं ड्रॉबैक की बात समझूं यहां से, तो ड्रॉबैक क्या होगा? फर्स्ट इज इट causes non-linearity. That is, output is not in proportion with input. Then the second drawback is what? Distortion in the output waveform. ठीक है, कैसे हुआ? अगर मैं एग्जांपल देखूं, दो एग्जांपल लेता हूं मैं. पहला एग्जांपल है हमारी, अगर इनपुट वेवफॉर्म ये है, दिस इज योर इनपुट वेवफॉर्म. क्लियर है? देन अगर आउटपुट बहुत तेजी से चेंज नहीं हो सकता है, देन अगर इस तरीके से चेंज हो रहा है, देन द वेवफॉर्म, आउटपुट वेवफॉर्म बिकम्स व्हाट? ट्राइपोजॉइडल. इनपुट जो है आपकी वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर है, बट जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी? ट्राइपोजॉइडल हो जाएगी. दूसरा एग्जांपल समझिए आप लोग. अगर आपकी इनपुट वेवफॉर्म जो है वो साइनोसॉइडल है. क्लियर है? देन द डिस्टॉर्शन इज लाइक दैट, योर आउटपुट वेवफॉर्म में गेट a triangular waveform. So this is called the distortion in the output waveform. So slew rate की definition, range, formulas, then the maximum frequency at which distortion not occurs. ये क्वेश्चन काफी मिलेगा आपको. Then conditions, drawback, everything I have covered in the slew rate part. Clear है यहाँ तक?